Good morning to all. Good morning, sir. Good morning. So, actually, we'll discuss in the Matlab classes, lab classes, how to draw the figure. Today, I will discuss about Matlab program. सर ये ग्रुप सी के लिए क्लास है। हाँ, ग्रुप सी के लिए ओनली। दैट इज अ लैब क्लास। अभी तुम फ्री हो क्या? एवरीवन अदर ग्रुप्स आर फ्री टुडे नाउ? यस सर, क्लास चल रहा है। ओके, तो ओनली ग्रुप सी वाला ज्वाइन कीजिए, लैब कर देंगे। ओके, सबका एक ही टाइम फ्री होगा तो नहीं तो एक दिन में लैब क्लास ले जाएंगे। ठीक है, देखो ये आज हम स्टार्ट कर देते हैं। जब कोई हम एक ग्राफ हम ड्रॉ करने चाहते हैं, किसी का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो स्पेशली फॉर वी कैन यूज द Matlab which one give a graphical representation. Matlab represents a graphical representation form for the different equations. Symbols and colors also we can draw by using the coding systems. That is only for the Matlab coding. Different type of results, what is actually to find out, we can use and solve the problem. Suppose that is two-dimensional figure we consider. One two-dimensional figure is considered. So how to draw it this one? So just we can represent this is the two-dimensional representation. Then that means we can represent that is one of the x-axis and another one is the y-axis. And those figures which will come in this graph or the first region we have to consider. Levels to the x-axis, levels to the y-axis can also be given using the command x-axis. That means level to the x-axis, level to the x-axis. That means x level we can represent this value, x level, and level to the y-axis to the y-axis, and that is also represented as the y level. So x-axis, and this is represented as the two-dimensional figure. This is represented as the 2D, or that is simply represent two-dimensional. Two-dimensional representation. This is simply represented as the two-dimensional representation. And x level, there is some value, and y level as some value. We have represent this one. Suppose we need to draw some figure t 2 pi r, that is also a line space.
सपोज वन फिगर वी वांट टू ड्रॉ, एक कोड हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, that is t we consider small t, and that is we have written line space, and bracket 0 comma 2 pi 0 comma 2 star means 2 into pi. Pi means we represent pi comma 100, and final last में हम लिखेंगे semicolon here. Then y एक रिप्रेजेंट करेंगे, and y में क्या होगा ना 10 into exponential function means exp, that is of minus of t, and semicolon. Plot t comma y comma gs. Plot t comma y comma gs. The text 3.4, bracket, that is 3.4, comma an exponential curve, एक एक्सपोनेंशियल कर्व का हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, then this can be as the inverted x level, x axis we can represent, x level, that is x axis, y level, that is y axis. So just this is the we draw this figure of the exponential function. Exponential function means e to the power minus of t. Exponential function, this is the exponential function, here t is there, so e to the power t, that is exponential function. So just we how to draw this figure. First we can create the Matlab file. Just you can see one graph how to draw it. One code I has already given here, that is the form of the differential equation form. Just we can create the another one. So just we have written t is equal to given line space. Just function में लिखेंगे t is equal to line space, line line space, ब्रैकेट देंगे 0, 0, 2
star pi, pi, comma into 100. And finally, we have written the semicolon. To enter, y is equal to 10 into 10 into exp, exponential function, minus of t, semicolon. Then again enter this value. You have considered t value and y value, then plot t comma y, plot t comma y, comma gs, inverted comma, that is gs, that I have written. Then also you can draw this figure also. And just to add here, undefined variable line space. Okay. Then text भी एक लिखेंगे यहाँ पे, that is a text 3.4. सर वो लास्ट में सेमीकोलन नहीं रहेगा? ग्राफ में लास्ट में प्लॉट में तो यहाँ यस पे सर। सेमीकोलन नहीं रहेगा. देन एंटर करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट and that is 3.4, कमा, इन्वर्टेड कमा के बीच में रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन on exponential curve. Exponential curve. Then x level, that is x-axis. And y level.
that is y-axis. X label as an inverted comma, x-axis. And y level also inverted comma के बीच में रहेगा. y-axis. Y-axis. सर वो s होगा, अपने x लिख लें. अच्छा अच्छा हाँ हाँ. So this is the form actually how to draw the graph, and this is the coding here. सबके पास मतलब है लोड? नहीं है? No, sir. Oh. Okay, no problem. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब ड्रा करेंगे ग्राफ, तो इसी टाइप का इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा. एक्स लेवल वाई लेवल भी कर सकते हैं, देन उसको हम ड्रा भी करेंगे. ये अब इन दिस ग्राफ देखो, x एक्सिस y एक्सिस का जो वैल्यू हम अभी x का कुछ लेंथ हम ले लिए हैं, जो प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम में किए थे. x का कुछ लेंथ हम लाइन स्पेस किए हैं, ठीक है. यहाँ पे x का एक लेंथ ले लिए. देखो x इज इक्वल टू -2 से -2 से 0.5 टू दिस वैल्यू, एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज कंसीडर एंड प्लॉट x, y. तो एक ग्राफ यहाँ पे आ गया. एवरीवन सी द ग्राफ और नॉट? Hello. No, sir. No, sir. This is your graph. You can see now. Now you have seen Yes, sir. Yes, sir. this type of graph will come. ये ग्राफ को हम अभी ऐसे भी कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं ना, इसको हम इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो फाइल है, तुम यहाँ पे देख सकते हो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल बॉक्स, डेस्कटॉप, ये सब है. यहाँ पे फाइल एडिट में हम जाएंगे. एडिट के क्लिक करने के बाद कुछ डाटा यहाँ पे आता है. देखो कॉपी फिगर, कॉपी ऑप्शन, एक्सिस प्रॉपर्टीज. हम एक्सिस प्रॉपर्टीज है, ये एक्सिस प्रॉपर्टीज के ऊपर में क्लिक करेंगे. जस्ट क्लिक ऑन एक्सिस प्रॉपर्टीज. ओके, शेयर कैंसिल हो गया ना? Yes, sir. ओके, फिर एक बार देखो.
ये जो फिगर था यहाँ पे अभी आ गया, फिगर में अभी हो गया। देखो अभी एक्सिस ऑफ प्रॉपर्टीज के बाद ये फिगर आ जाता है। यहाँ पे ये फिगर को जिस टाइप का करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे 4 फिगर बनाएंगे एक इसके हिसाब से। तो राइट साइड में देखो, राइट कॉर्नर में इसका लेंथ हम थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नीचे एक है 0.5, यहाँ पे लिखो लाइन का स्पेसिंग दिया हुआ है, इसको जिस टाइप में लिखेंगे, सपोज इसका हम डॉटेड लाइन करेंगे तो इससे आ जाएगा। इसका थिकनेस थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो इसी टाइप का जैसे हम करना चाहते हैं उसी टाइप बना सकते हैं। तो दिस 4 लेंगे तो ये होगा, सपोज 6 कंसीडर करेंगे तो दिस टाइप फिगर विल कम। अभी क्या उसको कलर चेंज करेंगे, तो इसके ऊपर फिर क्लिक करेंगे। कलर सपोज में चेंज करना चाहते हैं तो एक काम करेंगे, जो कलर्स लेंगे वही कलर यू कैन चूज इट। देन एक्स लेवल को नेमिंग करना चाहते हैं, तो एक्स लेवल में यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स लेवल, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वी कैन रिप्रेजेंट दिस इज एक्स एक्सिस। एंड एक्स एक्सिस के ऊपर में क्लिक करेंगे एंड इसका थिकनेस थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, उसके ऊपर में क्लिक करेंगे 14। ये नॉर्मल था, उसको हम बोल्ड कर देते हैं। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस करेंगे तो वाई सिर्फ एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या करेंगे ना, वाई को पे क्लिक करेंगे तो अभी थिकनेस उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज 14 सपोज। एंड नॉर्मल जो है उसको बोल्ड करेंगे। दिस इज, वी कैन रिप्रेजेंट दिस द वैल्यू x axis y axis as converted into bold form. Again you can do also the front size thickness you need to increase। तो ये जो front size 10.0 था उसको हम 14 कर देंगे एंड वो जो वैल्यू है बोल्ड कर देते हैं तो ये बोल्ड में बोल्ड फॉर्म में आ गया। उसके बाद देखो ये फिगर का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फिगर आ गया। लेट वी कैन इंक्रीज दिस वैल्यू, दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अभी हम इंसर्ट जाएंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा। ये एरो मार्क हो गया, सॉरी सॉरी ओवरकम हो गया। नेक्स्ट एक फिगर ड्रा कर देते हैं, अगेन उसको राउंड कर दीजिए। सर वो जो ग्राफ आएगा वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से आएगा कि किस आएगा? एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से आएगा। ये जो ग्राफ था दैट इज फॉर एक्स वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से आएगा, बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट इट एक्स वाई कोऑर्डिनेट फॉर्म। जो फिगर ये रिप्रेजेंट किए थे दैट इज फॉर ओनली द एक्स वाई कोऑर्डिनेट फॉर्म। हम रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को हम नेमिंग करते हैं, जो भी नेमिंग कर सकते हैं। सब तो सपोज एक्स एक्सिस इज द फ्लो ऑफ हीट लिखेंगे, फ्लो ऑफ हीट, तो भी तुम ऐसे कर सकते हो। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे टाइम इंटरवल, टाइम। तो वाई एक्सिस में टाइम ले सकते हो एंड दिस वन इज सेप इंक्रीज कर दिस इन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये फ्लो इंक्रीज होता है। Suppose flow of the motion of the liquid will increases with increasing of the with respect to time। इसको हम थोड़ा थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो ये बोल्ड करना हुआ तो बोल्ड कर देते हैं। एंड फ्रंट साइज को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो यू हैव टू ऐड आल्सो फ्रंट साइज दैट इज 14 एंड ऐड दिस वे। एंड वी कैन रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ लिक्विड विद एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम यहाँ पे इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स जो है, टेक्स्ट एरो नहीं टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे देखना होगा,
दिस इज टेक्स्ट बॉक्स। तो ये टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे फ्लूइड फ्लो with respect to exponential form. Fluid flow with respect to exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फ्लो होता है, इसको हम थोड़ा बोल्ड भी कर सकते हैं, एंड बोल्ड कर देते हैं। If we can remove this form, then we can also इसका भी थिकनेस हम इंक्रीज, ये व्हाइट वाला कलर पुट कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो ब्लैक also converted into any color you have to choose. This also you can consider. So you can copy also this figure and you can put in your codings. Copy this figure, copy figure. You can copy this and put into your problem. Then you can put here also, that is the problem in the case of exponential form. सर सेव नहीं हुआ। नहीं सेव हो गया, बट यहाँ पे सेव कर दिया। उसको सेव करेंगे तो क्या करना होगा ना हमको, यहाँ पे जो फाइल है सेव बाजू मारेंगे तो जहाँ सेव करना है हम कर सकते हैं। अभी जो उसको मैं कॉपी किए हम जो जहाँ पे राइटिंग किए थे उसी फील्ड में अभी हम देख सकते हैं। दिस इज आवर स्क्रीन, दिस द फिगर, यू हैव सीन दिस फिगर नाउ, जो सेव किए हम पेपर में, ये दिस इज ए फिगर, कॉपी किए उसके बाद ये सेव हम कर दिए यहाँ पे। Are it clear everyone? Hello. Yes. So this is the exponential for graph of the exponential form which can be represented here. Similar procedure also we can represent तो और भी कुछ ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं। दैट वी सपोज sin x का ग्राफ ड्रा करेंगे कि cos x का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, एनी ग्राफ ऑफ sin x हम कैसे करेंगे। तो sin x का ग्राफ स्पेशली कैसे होता है? Anybody can say what is the actually significance of the sin x? Anyone can say what is the significance of sin x? Anyone? sin x का हम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट 2। y is equal to sin x. तो sin x का स्पेशली हमको दैट इज आल्सो टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। sin x is a graph that is also two dimensional representation. So we know that one condition, we know that sin n pi equal to 0.
दैट मीनिंग साइन 0 का वैल्यू, साइन पाई का वैल्यू, साइन 2 पाई का वैल्यू, ऑल दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। साइन पाई का 0 होगा, साइन 0 का 0 होगा, साइन 2 पाई का 0 होगा, sin 3 pi 0, sin 4 pi 0, all those values are 0, means that is the starting term of the curve of the sin x. And we know sin x का range value -1 से 1 है. So when a curve moves on maximum top level, then that is 1, means sin x is equal to sin 2n plus 1 into pi by 2. In this case, that is value is +1 and -1 to the power n. That means x is equal to 2n plus 1 into pi by 2. That is plus minus. So sin 90 degree means that is pi by 2, 3 pi by 2, etc. In these cases, the value of sin x is specially represent like this. Starting 0 and pi by 2, 5. Then this is 1 and this is the -1 point. When starting curve is up to this, then in curve this, then return to this, and like this. The sin x is curved like this. In this way, you can move. This is the graph of sin x in Matlab code. तो इसीलिए हमको एक रेंज तो ऑलरेडी गिवन डाटा है, तो व्हाट इज द रीजन, नाउ हाउ टू ड्रॉ दिस ग्राफ. sin x का ग्राफ हमको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे? sin x का ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो sin x का जो डाटा था हमको वो डाटा पहले हमको लिखना पड़ेगा. व्हाट इज द रेंज हम कंसीडर करेंगे, sin x का रेंज क्या कंसीडर करना पड़ेगा, मींस x का वैल्यू लेंगे एंड y का वैल्यू कंसीडर करेंगे, देन ड्रॉ दिस फिगर. x का कुछ लेस ले जाएंगे, y x का कुछ लेंथ ले लेंगे एंड उसका फिगर हम ड्रा करेंगे. सपोज just to see the length of x minus pi I command is to 0.01 is to pi and this grid on, and just run in this figure. So now just one point is given here. You look out here, the value of x is minus pi I, then it's to 0.01 is to pi I. Then we can represent the semicolon, means minus pi to pi, that interval, and plot x comma sin x, x comma sin x, grid on. Then जो figure यहाँ पे आया है, that figure, now we can see this figure. एक figure यहाँ पे अभी आया है. You can see this figure. You have seen this figure? Hello? Yes, sir. This is the figure of sin x. Then हम क्या करेंगे ना, उसको अभी edit करेंगे. फिर edit axis properties. Edit then axis properties. अभी हो गया. अभी इसको just one complete rotation, that is minus pi to pi के बीच में था. This is the interval. सर वो जो पॉइंट करते हैं कैसे करते हैं? ये पॉइंट ये वैल्यू ऑटोमेटिक आएगा, बिकॉज उसका जो नहीं सर, रेंज, वो
सर वो ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट जैसे किए थे ना अभी, ये ग्रिड वाला, ग्रिड ऑप्शन में दिए थे इसीलिए ये वाला आ गया, स्क्वायर साइज वाला। तो ये स्क्वायर फिगर तो नहीं सर वो जो डायग्राम था ना उसके ऊपर ऐसा पॉइंट पॉइंट आया था ना वो कर्व के ऊपर। वो ये। ये सर यस। हाँ, अभी जो क्लिक कर देते हैं ना उसको पॉइंट पॉइंट आएगा, उसको हम फिगर में जो जिसी टाइप में रिप्रेजेंट करेंगे उसी टाइप में वो आएगा। सपोज ये फिगर को हम इसी फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इसको बोल्ड थोड़ा करेंगे, देखो इसी टाइप भी कर सकते हो। मतलब ये फिगर को ऊपर में हम क्लिक कर देते हैं, एक नीचे है देखो, नीचे लाइन का है, मार्क है, ये कौन सा कलर देना चाहते हो तो कलर भी है। तो ये सब, ये कलर को हम चेंज करना चाहते हैं तो तुम चेंज भी कर सकते हो, क्लिक एंड एनी कलर you can put also this value, and this is y is equal to sin x, means this is x axis, x axis में लिखेंगे x axis, that is x axis, and y में रिप्रेजेंट करेंगे sin x, sin x, and this is sin x figure, sin x figure, this is x axis. So this is the first one complete rotation path of this figure. ये फिगर को हम सपोज कॉपी कर कर वहां पे हम पेस्ट करेंगे तो साइन एक्स का कोडिंग भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो साइन एक्स कोडिंग था वो कोडिंग को हम अभी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। जो ग्राफ में हम रिप्रेजेंट किए थे, दिस इज अ फिगर ऑफ दिस, मेटलैब कोड में जब लिखेंगे तो साइन एक्स का जो फॉर्मूला वो हम भी पेस्ट कर दिए। जस्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई आई टू पाई, यहाँ पे 2 पाई आई करेंगे तो और कुछ वैल्यू आएगा। इसी फिगर को हम अभी कॉपी कर देते हैं, एडिट, कॉपी फिगर, copy figure, then you also paste in that equation. This is the figure we can paste here, and this one is the figure also, sin x. This is the exponential function, and this is the sin x का figure. सपोज इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसका लेंथ हम इंक्रीज करेंगे। सपोज पाई आई के जगह में 2 - 2 स्टार कर देते हैं, पाई आई 0.01 इज द स्पेसिंग पॉइंट उसका, इनटू 2 स्टार पाई आई। ये भी ले सककर तुम ड्रॉ कर सकते फिगर। तो तुम्हारा एक फिगर भी यहाँ पे आ सकता है, देखो दिस इज 2 कंप्लीट पाथ, यू चेक इट, दिस इज just you can see your figure also, देखो 2 पाई तक this, you have see this figure, Yes, sir. तो ये 2 सर पाई कौन सा कोड चेंज करके ये फिगर चेंज करके बताएंगे? ये जो कोडिंग है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 इंटू पाई आई इज टू 0.01 इज टू 2 इंटू पाई आई लिखा गया है। मतलब x का लेंथ हम कंसिडर किए -2 पाई आई से 2 पाई आई, एंड द स्पेसिंग लेंथ 0.01 कंसिडर किए हैं। Just we have considered 0.01 is the spacing length. Then we draw this figure
just plot x comma sin x ग्रीडन इन स्क्वायर से जाए आने के लिए हम ग्रीडन किए हैं, ग्रीडन नहीं करेंगे तो पूरा व्हाइट ही आएगा। सो दिस इज स्पेस, ये कॉपी करेंगे एंड दिस वन इज पेस्ट इन जो पेपर था उसी में पेस्ट कर सकते हैं, just to paste it one minute. This is the diagram, this is the just program for x sin x का। अभी उसके फिगर को भी हम लेकर पेस्ट करेंगे, तो जस्ट you can see the increase your thickness, click on 0.5 and convert into 4 this figure. Suppose you need to change this color black color and x axis हम नेमिंग करते हैं, that is x axis। x axis आ गया, x axis में सॉरी दिस इज y axis, हम y axis में रिप्रेजेंट किए हैं। y axis हम y axis में हम लिखेंगे sin x, this is sin x and just increase our thickness and this y axis x axis, that is x axis यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं and this we can represent this 14 and normal is converting to whole form. So this is the figure of the sin x. You have seen, and front side also you can increase this one. Click on front size. Then you have front size 10.0 is there. So you convert into 14.0. So front side also converted into 14 point, but that is not bold. You convert in bold, in niche you have a bold, so click bold. So that is a bold figure is there. So you can copy this figure, edit option and copy figure. Then just you go your file and put there Matlab code along with this picture. This is also picture you have to put it here. And this is the graph of the sin x and the interval -2 pi I से 3i. Suppose 3i consider करते हैं और एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे 3 pi I करेंगे, -3 pi I से 3 pi I, इंटरवल चेंज कर देंगे तो that is also increased. Another interval also increased here, just you can see this figure. You have seen this figure? Hello? Yes, sir. देखो, you can see this is the graph increase. Suppose और चाहते हैं इंक्रीज करने के लिए 3 pi से 4 pi कर सकते हैं, 4 pi to 5 pi ऐसे कंटिन्यू, that is the wave structure picture. सपोज ग्राफ अभी हम इंक्रीज कर देते हैं, 3 से 5 डाल देते हैं, 5 pi I, 5 pi I से प्लस 5 pi I, देन हम ड्रा करेंगे। Then you can see this picture. You have seen this picture? Yes, Yes, sir. This is a picture. And you also convert into bold form. And like this, we can draw this picture. तो मतलब वो जो 0.01 है वो फिक्स रहेगा, नहीं चेंज कर सकते हो, स्पेसिंग ऑल्सो चेंज 0.01 0.020 जो भी ले लेंगे उसको पॉइंट सबसे, बट इसी टाइप का ही आएगा। ओके सर। So just you can
Another figure also you can put here. That is also one figure. तो ठीक है, आज इतना तुम करो. Next class we will discuss another some programs about this. Okay. फ्राइडे को आएंगे तो थोड़ा मैटलैब सॉफ्टवेयर दे देंगे. हाँ हाँ हाँ, मतलब मेरे एक्चुअली ये में है. आप आकर यहाँ पे भी लोड कर सकते हो. मेरे पास पेन ड्राइव में है. आप उस बार गूगल पर हम लोड कर देंगे, नहीं तो आप भी कर सकते हो. ओके. Okay. So thank you. We'll discuss next. Okay. Okay.